Hello, my dear students. Welcome to the fourth lecture of electric charges and fields. Today we will discuss the MCQ questions of electric flux, electric dipole, and continuous charge distribution. Going to first question of electric flux. The SI unit of electric flux is. So here it is asking to find out the SI unit of flux. So we know the formula flux for flux is phi is equal to E dot S, or if the angle between them is 0 degree, then it will be simply ES cos 0. That means simply ES. So here the unit of electric field is Newton per coulomb, and this S stands for area. So that means unit of area will be meter square. So it will be Newton per coulomb into meter square. Newton per coulomb meter square. So option A will be the correct one. Rest others will be wrong. Next, question number 64. It is asking the dimensional formula for electric flux. So just now we got the formula for flux is E into S, electric field into area, when both are in the same direction, when or angle between them is 0. So here in this particular case, the dimensional formula for flux can be written as electric field is nothing but force per charge into area. So here force and the dimensional formula, or you can write the force. We can write the force, or you can keep it like this: force, and Q is nothing but current into time, and area is nothing but length square. So finally, the dimensional formula for flux is m1 L1 T power minus 2. Dimensional formula for area is L square all divided by the dimensional formula for current is simply ampere, and for time it is capital T. So finally, what we'll be getting, m power 1 L, there is L here having power 1 and another L having power 2, so L power Q, एंड टी जो यहाँ पे नीचे है वो ऊपर जाएगा, तो टी का पावर यहाँ पे -3 हो जाएगा, एंड ए पावर -1. So the dimensional formula for flux will be m1 lq t power -3 a power -1. m1 lq t power -3 a power -1. So option B will be the correct answer. Clear? Option B will be the correct one. Next, moving to question number 65. Here in this question, a circular plane sheet of radius 10 cm is placed in a uniform electric field of 5 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Clear? There is a circular plane sheet whose radius, circular plane sheet is given, whose radius is 10 centimeter. Clear? And it is placed in a uniform electric field. Uniform, how will you represent the uniform electric field? Uniform electric field is generally represented by parallel lines. Uniform electric field is generally represented by parallel lines, and the value of this uniform electric field is 5 into 10 to the 5 Newton per coulomb, making an angle of 60 degree with the field. That means the plane of the sheet makes an angle of 60 degree with the field. If this is the field, suppose here in this particular case, if this is the field that is along x-axis, then the plane of the coil will be making 60 degree angle. With a 60 degree angle means we can represent it. Suppose if we'll take this one as the field, then this plane will be making. So this is the plane sheet, circular plane sheet. Clear? So its plane will be making an angle of 60 degree. That means its plane, this particular plane. Clear? This plane makes an angle of how much? 60 degree.
Clear? If the plane makes an angle 60 degree, then the electric flux through the sheet is, what is the flux through the sheet? Clear? So here in this particular case, we know the formula for flux. The formula for flux is how much? Phi is equal to E bar dot S bar, and it is nothing but E S cos theta. What is theta over here? Theta is nothing but the angle between the electric field and the normal to the given area. Clear? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है ये प्लेन मीन्स ये जो एंगल है यहाँ पे जो आपका सरफेस है, सरफेस का जो नॉर्मल है वो किस तरफ होगा? सरफेस का नॉर्मल दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस. क्लियर? Normal to the surface will be always perpendicular. Here in this particular case the normal will be simply outward. Clear? बाहर की तरफ यहाँ पे होगा. So here in this particular case if the plane makes an angle of 60 degree with the field इस तरफ है और यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है, तो नॉर्मल के साथ ये फील्ड कितना एंगल बनाएगा? दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी 30 डिग्री. क्लियर? प्लेन एंड नॉर्मल के बीच में टोटल ये प्लेन है और ये हमारा प्लेन है, और प्लेन एंड नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री यहाँ पे है. तो प्लेन के साथ अगर 60 डिग्री बना रहा है तो नॉर्मल के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल मेक 30 डिग्री. सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस द formula for flux will be using E S cos 30 degree. Electric field is given. Electric field is 5 into 10 to the 5 Newton per coulomb, 5 into 10 to the power 5, and area is, okay, area is not given, but the radius of the given plane circular sheet is given. So radius is how much? 10 centimeter. That means its area will be simply pi r square. So pi into radius is 10 into 10 to the power minus 2 square. Clear? So finally if we put this value, so area can be written as pi. The value of pi is 3.14 into 10 into 10 to the power minus 2 whole square. Cos 30, what is the value of cos 30? Cos 30 is nothing but root 3 by 2. So finally what answers we'll get? We'll do little bit calculations. So 5 into 3.14 into, here 10 square that is 100, that means 10 to the 2, and this is 10 to the minus 4, so it will be 10 to the power minus 2. So finally here we can write root 3 by 2 into 10 to the power 5, which is present over here. We'll write that one into 10 to the power minus 2. This particular value will be simply 10 to the power minus 2. So after that the calculations will be, so here in this particular case we can write it like 5. So here if we put these values, so 5 for 20, here it will be 7, so 5 15.70 into root 3 is 1.732 whole divided by 2 into 10 to the power 3. Okay, so here in this particular case and further calculations we can do it. So if we cut this one, this particular value will be 7 85, so 7.85 into 1.732. so here in this particular case how much will be getting? Nearly approximately, so here if we do calculations, that means assume this 7.85 to nearly approximately equal to 8, and let it be 1.7. Clear? So 8 into 1.7, clear, into 10 to the power 3. So it will be approximately 13.6 into 10 to the power 3 if we multiply. So finally it will be 1.36
approximately 1.36 into 10 to the power 4. क्लियर? तो अप्रोक्सीमेटली 1.36 1.3 के आसपास यहाँ पे हमें रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा 1.3. सो विल चेक द आंसर्स 1.3 into 10 to the power 4. So here 1.36 into 10 to the power 2 and 1.36 10 to the power 4. So option B will be the correct one. Moving to the next question. A uniform electric field 2 into 10 to the 3 Newton per Coulomb is acting along the positive x-axis. Uniform electric field is along x-axis. The flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane is. Okay. So here in this particular case, if we draw the three-dimensional Cartesian coordinate system, 3D system, so this is x, y, and this is z. So what will be the YZ plane? This is the draw the YZ plane over here. So this is the YZ plane. This particular one is the YZ plane. Clear? So here, if this is the YZ plane, ये यहाँ पे YZ plane है. Clear? And this is a square shape YZ plane. And here in this particular case, the electric field is along x-axis. Electric field यहाँ पे along x-axis है ऐसा. Electric field is along x-axis. Clear? So this electric field is given E equal to 2 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb. The flux of the field through a square of side is 10 centimeter. Okay, flux. What is flux? So here in this particular case, first of all, we need to write down the formula. Formula is phi is equal to E bar dot S bar. Clear? That means E S cos theta. So what is the angle between the electric field and the normal to the given area? So what is the direction of normal? Normal to the given area will be perpendicular to the given surface, and that normal will be along the direction of field. This is the direction of normal to the given area. Clear? So if it is the direction, that means here in this particular case theta is coming out to be 0 degree. So if theta is coming out to be 0 degree, that means flux phi is equal to Es cos 0. So it will be simply Es. Here, then what is the area over here? Area of the given square. So it will be 10 centimeter as the side is 10 centimeter. That means 10 square. So 10 into 10 to the power minus 2 square. Clear? So this will be approximately 10 to the power minus 2. Clear? ये area कितना मिलेगा हमें 10 to the power minus 2 finally. So if we just do calculation over here, so flux will be electric field is given 2 into 10 to the power 3 into area is 10 to the power minus 2. So it will be coming out to be 10 to the 3 minus 1, so it will be 20 Newton per Coulomb meter square. So it will be 20 Newton per Coulomb meter square. So this is the flux, 20 Newton per Coulomb meter square. Clear? Option A is the correct one. Next is connected question. In question number 66, the flux through the same square if the line normal to its plane makes an angle 60 degree with x-axis. So here in this particular case, normal of the given plane is making an angle of 60 degree. That means what? We can check it over here. Here in this particular case, suppose that particular plane which is present over here, here, this particular plane is making an angle of 60 degree. That means how can we draw that one? So it was previously it was there in YZ plane, but right now it is like this. This particular plane is like this.
Let me draw it more properly. Let this be the particular plane. Clear? And normal to this plane, this particular normal, which was previously along x-axis, right now it is along this particular direction. This is n cap. Clear? The electric field is towards right, and this particular normal right now is along this direction. This is the direction of normal to the given plane. Clear? Normal is represented by n cap. Clear? So right now this is making an angle of how much? It is making an angle of 60 degree with the field. Clear? So it is making an angle of 60 degree with the field. So that means here in this particular case, this is the given square, and its normal is along this direction n cap, and the field is along x-axis. No change in the field. Clear? Angle between them is 60 degree. Then flux will be phi is equal to es cos 60 degree. So the value of e cos 60 is 1 by 2. So es by 2. So this is the value of flux. So but the value of electric field is what the value of electric field or electric flux we got right now? What the value of es, what we got right now is 20. So finally if we put that value over there, so phi will be equal to 20 upon 2. So it will be simply 10 Newton per Coulomb into meter square. So in this particular case it will be 10. That means option B will be the correct one. Clear? Option B is the correct one. Next, moving to the concept of electric dipole. Okay, so here in question number 68, which of the following statement about dipole moment is not true? So first option is dimensional. The dimension of dipole moment is dimension of dipole moment. So dipole moment P, it's a vector quantity, and what is the value of the dipole moment? Dipole moment can be written as simply q into 2a some n cap. Clear? As it is vector quantity, so it must have some direction. So here in this particular case, the dimensional formula will be nothing but q is equal to I into t, and this is nothing but the length of the dipole. So let it be the length. That means let it can be indicated by L. Clear? So finally here in this particular case, the dimensional formula for current is ampere, and time is capital T, and for length it is L. Clear? So that means it will be simply LTA or ATL you can write. So finally it will be LTA. That means it is correct. The unit of dipole moment is, so dipole moment जो है उसका यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर. सो Q के लिए कूलम एंड लेंथ के लिए मीटर. सो फाइनली कूलम मीटर इज द correct one. Dipole moment is a vector quantity and directed from negative to positive charge. So always remember what is the direction of electric dipole. So a negative charge and a positive charge when separated by some distance. Clear? This is called electric dipole, and the direction of this dipole moment is defined as, if distance of separation is 2a, then dipole moment P is equal to Q into 2a. Then as it is a vector quantity, will be having some direction, then this direction will be always, this direction is always from the negative charge to the positive charge. Clear? So that means here in this particular case this option is also correct. Dipole moment is a scalar quantity and has magnitude equal to potential energy of the system of charges. Clear? Dipole moment is a scalar quantity. Already यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को बोला गया है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम ऐसे, उसका एक यूनिट वेक्टर भी वहाँ पे रहता है. Clear? That a unit vector is directed from negative charge to positive charge, so it cannot be a scalar quantity. Clear? And has a magnitude equal to potential energy of the system of charges. Potential energy का जो यूनिट होगा वो आपका जूल में एक्सप्रेस करेंगे. क्लियर? तो यहाँ पे इसका यूनिट कुछ अलग आ रहा है, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला अलग आ रहा है. पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कितना होगा? m1 L2 t पावर -2. ये पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, बट देयर इज नो question of mass over here, so that means this is the wrong one. Clear? That means that statement is not true about the dipole moment.
Moving to question number 69 here, it's saying that shown in the figures it is a cell made of a conductor. This is clear. So this is a cell which is made of a conductor. है. It has inner radius A and outer radius B. That means it has a inner radius. Inner radius, that means this particular value is A, and outer radius, this particular value is B. And carries a charge Q. So that means this cell is actually, if you give some charge Q, that means positive charge, that means what will happen, these positive charges will distribute uniformly over the entire surface and outside of the surface. It will not move, the charge will not reside inside the given surface of the cell. Clear? तो इसको चार्ज देने से ये चार्ज ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है. एट इट सेंटर इज ए डाइपोल एज शोन इन फिगर. तो सेंटर में यहाँ पे क्या है, एक डाइपोल है जो कि इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ शो किया गया है. क्लियर? इन दिस केस सो इसमें कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे उसके ऊपर सही फिट होता है. क्लियर? So here in this particular case, surface charge density on the inner surface of the cell is 0 everywhere. Surface charge density यहाँ पे इस वाले particular case में inner surface में यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा. So here if we draw the figure once again, particular case, let this be the this means with a spherical cell here, and this, that means that one is the outer cell and inner cell, and this is made up of, completely made up of conductor. Here this is the conductor part, that means solid part present over here, and this is hollow one. Clear? And here inside there is a dipole. That means, and the direction of dipole is given in the upward direction. That means negative charge will be over here and positive charge will be present over here. Clear? That means here in this particular case, what we can say, as negative charge is present means this dipole is present at the center. That means negative charge is present at the downward side. That means positive charge will induced on the inner surface due to the induction. Clear? Similarly, negative charges will induce on the inner surface of the given spherical conductor. Clear? Or the given conducting cell. Clear? So here in this particular case, what it is saying, the first surface charge density on the inner surface of the cell is 0. तो surface charge density on the inner surface, तो ये साइड आधा मान लो कि हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो आधा पोर्शन यहाँ पे ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ. तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको कि हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, सिग्मा इज नथिंग बट क्यू अपॉन एरिया, चार्ज डेवलप्ड पर यूनिट एरिया. क्लियर? तो यूनिट एरिया में कितना यहाँ पे चार्ज डेवलप हो रहा है, तो उसी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं. तो ऊपर वाला पोर्शन का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, दैट विल बी, मान लो कि टोटल चार्ज यहाँ पे ऊपर वाला जो पॉजिटिव चार्ज के वजह से नेगेटिव चार्ज कुछ डेवलप हो रहा है, तो वो नेगेटिव चार्ज कितना होगा, मान लो कि एज्यूम दैट लेट इट बी क्यू प्राइम. क्लियर? और नेगेटिव डेवलप हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय एरिया यहाँ पे हमें कौन सा पार्ट यहाँ पे लेना है, जो पार्ट हमारा जितना पोर्शन वाला पार्ट है जहाँ पे हमारा यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ है. तो इंड्यूस वाला पोर्शन, दैट मीन्स हियर इट इज द टोटल एरिया, दैट मीन्स टोटल इनर एरिया, सो इनर सरफेस एरिया, सो इट विल बी 4 पाई ए स्क्वायर. क्लियर? चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया में मतलब हमें टोटल एरिया यहाँ पे लेना है. क्लियर? सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ bottom portion of the spherical cell. Clear? So that surface charge density, let it be sigma prime, so it will be again q, let it be q prime, q double prime divided by area. So q double prime यहाँ पे जो चार्ज यहाँ पे डेवलप हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज ही तो हो रहा है, तो ये दैट विल बी प्लस q डबल प्राइम डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर. क्लियर? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में हम ये एज्यूम करते हैं कि अपर हाफ पोर्शन में अगर q/2 चार्ज डेवलप होगा, तो लोअर हाफ में यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि अपर हाफ में -q/2, तो
लोअर हाफ में आपका प्लस क्यू बाई टू चार्ज डेवलप हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर में जस्ट हमें क्यू प्राइम के बदले क्यू बाई टू लिखना है, और नीचे आप क्यू डबल प्राइम में के बदले यहाँ पे क्यू बाई टू लिखना है। क्लियर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ऐसा नहीं कि टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी जीरो, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यू विल गेट सम सरफेस चार्ज डेंसिटी। अपर हाफ पोर्शन में सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा वो नेगेटिव होगा, और लोअर हाफ पोर्शन जो इनसाइड है सेल का उसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर, जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट, surface charge density on the inner surface is uniform and equal to q by 2 whole divided by 4 pi square। यूनिफॉर्म यहाँ पे हम ऐसे ऐसे तो नहीं बोल सकते कि यूनिफॉर्म होगा। surface charge density on inner surface is uniform and equal to q by 2। so here in this particular case let me tell you, अपर हाफ स्पीयर को अगर हम दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो अपर हेमिस्फेरिकल सेल जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, माइनस सिग्मा, और लोअर हेमिस्फेरिकल सरफेस जो होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, प्लस सिग्मा। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म यहाँ पे नहीं। क्लियर, साइन यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, दैट मीन्स दिस विल बी ए रॉन्ग। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों यहाँ पे क्यू बाई टू तो हो सकता है, लेकिन one will be positive and another one will be negative, that means this particular will be wrong। electric field outside the cell is same as that of point charge at the center of the cell। electric field outside of the cell, so here in this particular case if we check the net charge here in this particular figure, net charge q net will be 0 because both positive and negative charges of equal magnitude are present over there। clear, equal magnitude and opposite in sign। clear। so here net charge will be what, net charge will be plus q plus minus q, so both will cancel, so it will become 0। so that means here in this particular case what we can consider this whole system as, this whole system will be considered as a point charge having point charge of q magnitude। clear, why, because as you are giving some charge q to the system, that charge will reside on the outer surface of the system, no charge will reside on the inner surface or at the center of the given spherical cell, because electric field inside of the given spherical conducting body is 0। clear, अगर 0 है तो चार्ज यहाँ पे नहीं रहेगा। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन कंसिडर दिस होल सिस्टम, होल स्पेरिकल सेल एज ए पॉइंट चार्ज। इफ वी कंसिडर दिस होल सिस्टम एज ए पॉइंट चार्ज, then what will the electric field at some distance r, electric field at some distance r will be E is equal to k q divided by r square। clear, electric field at some distance r will be kq by r square, and how do we calculate that one, we can calculate that one by considering a Gaussian surface। Gaussian surface हमें यहाँ पे consider करना पड़ेगा r distance पर। clear, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम एप्लीकेशन पार्ट जाएंगे गॉस लॉ में। क्लियर, तो अभी बस इतना याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सेल इज सेम एज द पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल। मतलब इस सिस्टम को हम एक पॉइंट चार्ज अभी हम कंसिडर कर सकते हैं और किसी भी आर दूरी पर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आर दूरी पर कितना होगा, जितना पॉइंट चार्ज की वजह से होता है उतना ही होगा वहाँ पे। तो दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर, so here this option A is not correct। here surface already I have told you that surface charge is not 0 everywhere। clear, you will get some surface charge density, positive surface charge density or negative surface charge density। surface charge density, fourth option, surface charge density on the outer surface depends on P। outer surface में surface charge density, outer surface में तो यहाँ पे positive charges है और outer surface का radius यहाँ पे कितना होगा, B होगा। तो आउटर सरफेस का एरिया कितना होगा, 4 पाई बी स्क्वायर। तो आउटर सरफेस जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, लेट इट बी सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई बी स्क्वायर। क्लियर, तो इसमें डाइपोल मोमेंट का कोई भी नामो निशान नहीं है इस फॉर्मूले में। क्लियर, अगर डाइपोल मोमेंट का कोई भी टर्म यहाँ पे अगर नहीं है, that means surface charge density on the outer surface does not depend upon the dipole moment, magnitude of dipole moment। that means this will be the wrong one, so option C will be the correct one। moving to question number 70, two charges
plus 20 microcoulomb and minus 20 microcoulomb. These are given is shown in figure, placed 10 centimeter apart. That means this distance is 10 mm, 10 mm apart. So that means the value of 2a is given 10 mm, which is nothing but 10 into 10 to the power minus 3 meter. Okay, the electric field at point P on the axis of the dipole 10 centimeter away from its center O. 10 centimeter away from its center O. That location P is 10 centimeter from the center. Okay, so that means here in this particular case the value of R is given 10 centimeter. That means 10 into 10 to the power minus 2 meter. Okay. So what is asking electric field at point P? What is the electric field at point P due to the dipole? We know that the electric field at this is the axial point. At axial point, the electric field is nothing but it will be simply 2 AP divided by RQ. Clear? Here, and the direction of dipole moment is along the direction of the field. Clear? Same as the direction of field, so no need to put the vector sign over here. So magnitude wise the electric field we need to calculate. So here in this particular case, what is the dipole moment over here? We know that dipole moment will be P is equal to Q into 2A. So Q is either of the charge. You can take magnitude of either of the charge. That means 20 microcoulomb. That is 20 into 10 to the power minus 6 coulomb into 2A. 2A is already given 10 mm. Clear? So we can directly write 10 into 10 to the power minus 3. Clear? 10 to 10 to the power minus 3. So the numerical value will be what we'll get over here Q into, okay fine, so it will be 200 into 10 to the power minus 9. Clear? So 200 into 10 to the minus 9, this will be the dipole moment. Okay, if this is the dipole moment, and the value of RQ, what is the value of RQ, that we also know, we need to get it. So it will be 10 into 10 to the power minus 2 Q. So that value will be 10Q into 10 to the power minus 6, or directly you can write, so 10 to the power minus 1 you will get, so it will be 10 to the minus 3. So it will be 10 to the power minus 3. So finally if we put all these value, the axial electric field at the axial point will be 2 into 9 into 10 to the power 9, which is the value of K. And the dipole moment what we got is 200 into 10 to the power minus 9 whole divided by RQ is 10 to the power minus 3. Clear? So here 10 to the power 9, 10 to the minus 9, these two get cancelled out. So how much will you be getting? Will be getting, so here 18 to the 36, so 3600 into 10 to the power 3, so 3600, that means we can write it 3.6 into 10 to the power, here it will be 6, 3.6 into 10 to the power 6. So electric field it is asked, so Newton per coulomb. So options will be A, B, 3.6, no, C, option C, 3.6 10 to the 6 Newton per coulomb. It will be Newton per coulomb. Clear? Option C is the correct one. So let us try to understand the question by drawing a figure. So here what is saying is that consider a region inside which there are various types of charges. Okay, region could be a regular spherical region or cylindrical region. It has not mentioned about any particular region. Clear? Just a region. Let us consider a spherical kind of region, and various types of charges are there, but total charge is 0. Net charge is 0. Clear? That means suppose here and another thing, distribution of charges, how the charges will be distributed. चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है. तो मान लो कि यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्ज ऐसे ले सकता हूँ और 5 नेगेटिव चार्ज ऐसे ले सकता हूँ. क्लियर? आई कैन टेक इट लाइक दिस, और ये सिस्टम ऐसे भी हो सकता है. क्लियर? ये सिस्टम हम मान लो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो कितना हुआ पॉजिटिव? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कुड बी लाइक दिस, ये भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस। तो ऐसा कोई ऐसा कोई पर जो चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो कुछ मेंशन नहीं किया गया। क्लियर। तो फाइनली व्हाट इज सेइंग इज दैट एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन मीन्स आउटसाइड ऑफ दिस रीजन, ये वाला जो रीजन है इस रीजन में क्या होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड दिस रीजन, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट पी हो, या फिर ये वाला सिचुएशन अगर मान लो कि मैं ये पॉइंट पी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो, तो उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ओके, ये नेट चार्ज जीरो and electric field will be zero. That will happen only in a single case. That means if we take a dipole over here which is present at the center, and then net charge inside the given body is zero. Net charge is zero. That means electric field at any point outside the given system, in that particular case electric field is zero. But here in this particular case, for the first figure, if I will take the point P, then the edge positive charges are present nearer to the point, or point P is located nearer to the positive charge, and point P is located farther away from the negative charge. That means these positive charges will dominate over here. That means electric field at point P due to the positive charges will be more as compared to the negative charge. Negative charges will attract, means field due to the negative charge will be towards the charge. Clear. So that means here in this particular case electric field cannot be zero. Clear. अगर ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं होगा। मे भी इस केस में जीरो हो सकता है। क्लियर। मे भी ये वाला केस में जीरो हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज। क्लियर। तो नेसेसरीली जीरो होना चाहिए, ये नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। Moving to the second option, the electric field is due to the dipole moment of charge distribution only. Okay, electric field जो यहाँ पे हमें मिलेगा outside the system, it is due to the dipole moment of the charge distribution. जो distribution हुआ है उसमें क्या होगा, ये मान लो कि ये distribution में एक dipole फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर ये एक डाइपोल फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। क्लियर। तो शायद इस डिस्ट्रीब्यूशन में ये दोनों डाइपोल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, बट ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों थोड़ा इनके बीच में डिस्टेंस और सेपरेशन ज़्यादा है। वैसे ही अगर हम ये सिस्टम लेंगे तो ये दोनों डाइपोल यहाँ पे हो रहा है, ये एक डाइपोल हो सकता है, ये एक डाइपोल हो सकता है। क्लियर। सिमिलरली दिस टू कैन फॉर्म ए डाइपोल, बट इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे डाइपोल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर। सो तो डाइपोल जो जितना भी चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया सब आपस में डाइपोल फॉर्मेशन होगा। क्लियर। ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्लियर। तो स्टेटमेंट में जो बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि मान लो कि ये यहाँ पे इस वाले फिगर में दो ही डाइपोल फॉर्मेशन है, तो बाकी तो सब इंडिविजुअल चार्जेस है, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। क्लियर। सो नॉट नेसेसरली, यहाँ पे भी वैसा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज जो मिलेगा हमें यहाँ पे आउटसाइड में, वो ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। क्लियर। तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से हमें आउटसाइड में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिल सकता है। क्लियर। सो दैट मीन्स दिस ऑप्शन, दिस second option is also incorrect. The dominant electric field is inversely proportional to cube of r for large distance. Clear. So large distance मान लो कि अगर हम अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल सपोज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। क्लियर। लार्ज डिस्टेंस मतलब मान लो कि ये जो सेकंड सिस्टम है, सेकंड सिस्टम यहाँ पे कहीं पे, if I take the point P to be over here, here I want to calculate the net electric field. So that means the whole system can be whole system will be considered as a very small ऑब्जेक्ट। क्लियर। यहाँ पे अगर पॉइंट P अगर थोड़ा पास में रहेगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर ये पॉइंट P को हम बहुत ही ज़्यादा दूर पे ले जाएंगे, मान लो कि फ्रॉम हियर इट इज़ लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r, फ्रॉम हियर इट इज़ लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r, देन इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो डिस्टेंस r है इससे ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा नहीं है। क्लियर। ये डिस्टेंस भले ही यहाँ पे थोड़ा बहुत तो ज़्यादा है, मतलब इट कुड बी मोर देन दैट वन ऑल्सो। क्लियर। अब मान लो कि ये स्पीयर का रेडियस मान लो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चाहिए। क्लियर। तो ये सिचुएशन वैसा ही यहाँ पे बोला जाए। दैट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर केस डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
cube of r, that means distance of separation from the origin. That means electric field due to that distributed system is proportional to क्यूब ऑफ आर. तो ये वाला केस कहाँ पे होगा? ये वाला केस तभी होगा जब हम डाइपोल का कॉन्सेप्ट लेंगे. ई इज इक्वल टू सिंपली टू के पी अपॉन आर क्यूब. ये वाला केस में तो तभी जाके क्यूब आता है. क्लियर? स्क्वायर नहीं रहेगा. तो डाइपोल मतलब इस वाले पर्टिकुलर केस में अगर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हुआ, जैसे एग्जांपल यहाँ पे बताया गया, ये अगर आर हुआ यहाँ पे 5 किलोमीटर हुआ और ये रेडियस ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, then in that particular case we can assume that this small individual positive and negative charges will form a dipole. This small individual positive and negative charges will form a dipole, and due to the individual positive charge and negative charge, the electric field might cancel over here. Clear? तो इंडिविजुअल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होगा उसके वजह से इस पॉइंट पर शायद ऐसा हो सकता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो. क्यों जीरो हो? क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर. क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे ये वाला केस जो है इसको हम एज्यूम कर सकते हैं. इट कुड बी पॉसिबल. क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन डी, वार्डन टू मूव ए चार्ज्ड पार्टिकल along a closed path away from the region will not be zero. क्लियर? अच्छा, चार्ज पार्टिकल को अगर मान लो कि हम इस जो आउटसाइड द रीजन ऑफ आउटसाइड ये जो रीजन है इसके आउटसाइड में अगर एक चार्ज पार्टिकल को क्लोज पाथ में हम मूव करवाएंगे, इफ आई ट्राई टू मूव ए चार्ज पार्टिकल इन दिस पर्टिकुलर क्लोज पाथ आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, देन वार्डन विल नॉट बी जीरो. तो वार्डन जीरो नहीं होगा. तो ऐसा हो ही नहीं सकता है बिकॉज आउटसाइड द रीजन outside the given region electric field is not zero. Electric field E is not zero. Clear? Electric field is there even though the net charge in present inside the system is zero, but electric field is not zero. But if electric field is not zero, that means the force there will be a force upon the charged particle which will be circulating or revolving in a closed path. Clear? That means it is a conservative force field. That means that charged particle will be moving in a conservative force field, and if the charged particle moves in a conservative force field, then the warden will be zero. देन द वार्डन विल बी जीरो. तो उसी वाले केस में आपका क्या होगा? वार्डन वहाँ पे जीरो होगा. क्लियर? बट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वार्डन विल नॉट बी जीरो. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जीरो होता तो वार्डन जीरो होता. क्लियर? बट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज नॉट जीरो, सो वार्डन विल नॉट बी जीरो. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Next in question number 72, 2-point charges 1 microcoulomb and minus 1 microcoulomb are separated by a distance of 100 angstrom. Okay, so let us draw the figure first. 2-point charges, one is let it be minus 1 microcoulomb and plus 1 microcoulomb, separated by a distance of this particular distance between these two charges is of 100 angstrom. At a point P at a distance of 10 centimeter from the midpoint of the given system, let this be the midpoint of the dipole, and on the perpendicular bisector of the line joining the two charges. Perpendicular bisector, that means here it is saying about the equatorial line. That means at equatorial line at a distance of 10 centimeter from the midpoint, let the point be over here, let the point be A. At this particular point, what they are asking to find out the field at P. That means that point be P. What is the net electric field at this particular point, which is situated at a distance of 10 centimeter. Clear? We know that the net electric field at the equatorial point, E is equal to simply vector wise minus KP by RQ. Clear?
So it will be how much? Minus Kp by Rq. So but magnitude wise we can write simply Kp upon Rq. That means the electric field is negatively directed, that or oppositely directed as compared to the direction of dipole moment. So here in this particular case, what is the value of P? So before doing the calculation, we'll try to write all these values. So here in this particular case, the value of charge, either of the charge is how much? 1 microcoulomb, that means 10 to the power minus 6 coulomb. Distance of separation, that is 2a, is given 100 angstrom, that means 10 to the power minus 8 meter. 100 into 10 to the minus 10 meters, so that will be 10 to the minus 8 meter. Clear? And distance r, which is nothing but 10 centimeter, or 10 into 10 to the power minus 2 meter, or it will be nothing but 10 to the power minus 1 meter. Distance r is 10 to the minus 1 meter. So finally, what is the dipole moment over here? Dipole moment will be simply q into 2a. Q is 10 to the power minus 6, 2a is 10 to the power minus 8, so it will be 10 to the power minus 14. Here is the dipole moment. So finally, and rq will be how much? rq will be simply 10 to the power minus 1 q, so it will be 10 to the power minus 3. Clear? So these are the values, and right now if we substitute all these values, so here in this particular case, the value of E will be equal to simply K is 9 into 10 to the power 9. Dipole moment, how much we got? Simply 10 to the power minus 14 divided by RQ, that is 10 to the power minus 3. So it will be 9 into 10 to the power plus 9 minus 14 plus 3. So it will be 9 into 10 to the power minus 2. So it will be 0.09. So net electric field at that particular case will be 0.09 Newton per coulomb. So here 0.09, option D will be the correct one. Next we'll discuss some of the concepts of dipole in a uniform electric field. Clear? So what here in this particular case, generally what we'll discuss, we will discuss about the torque acting on a dipole in a uniform electric field. Clear? So the first question in this topic is, the electric dipole is placed at an angle of 30 degree. Electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity this much. Okay, so here in this particular case, assume that this is the electric field intensity directed along x-axis. This is E, and there is a dipole whose dipole moment is at an angle of 30 degree with the electric field. Dipole moment is at an angle of 30 degree with the electric field. That means assume that this is the dipole moment of the given dipole, and this makes an angle of 30 degree. ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 30 degree. So that means here in this particular case, as the dipole is placed by making some angle with the electric field, that means what will happen? A torque will act upon it. Torque will try to orient the dipole along the direction of field. Clear? यहाँ पे उसके ऊपर torque लग गया. So finally here in this particular case, the torque which will act, torque का वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 4 न्यूटन मीटर, and here electric field is given 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb, and theta is given 30 degree. Clear? So these are the some values are given, and dipole length, that is 2a, that is given 2 centimeter. That means that will be equal to 2 into 10 to the power minus 2 meter. Clear? These values are given. So he is asking charge on the dipole. What is the charge on the dipole? So torque is given. As torque is given, so we know the formula for torque. Torque is can be written as tau equal to P bar cross E bar, or that will be simply PE sin theta. Clear?
So this torque is a generally it's a vector quantity, so generally it will be written as p sin theta n cap. So magnitude wise the value of torque will be simply pe sin theta. Clear? So magnitude wise this particular value, how do you get this particular value? So before that one, okay, so torque is given, so the value of torque is given is 4 newton meter. Dipole moment is not given, but electric field is given. Electric field is how much? Electric field is 2 into 10 to the power 5, and sin theta, that means sine of 30 degree. That means the value of p will be how much? It will be 4 upon 2 into 10 to the power 5 sine 30. Sine 30, that means it will be 1 by 2. So 2 got cancelled. So sine 30, that means it will be 4. It will be 4 upon 10 to the power 5, that means 4 into 10 to the power minus 5. So dipole moment, how much we are getting? 4 into 10 to the power minus 5 coulomb into meter. Clear? So finally this is the dipole moment, but it is asking about the charge. So if we know that p equal to q into 2a, the value of 2a is 2 centimeter, that means 2 into 10 to the minus 2 meter. So then charge will be how much? Then here in this particular case q will be equal to p upon 2a. So but p we got 4 into 10 to the power minus 5 divided by 2 is 2 into 10 to the power minus 2. So it will be 2, and if this 2 goes upwards, it will be 2 into 10 to the power minus 3 coulomb. Clear? That means here in this particular case the value of that charge q will be equal to 2 millicoulomb. Clear? So this will be the final 2. So we'll check 2 millicoulomb. That means option D will be the correct one. In question number 74, in a certain region of space, electric field is along z direction throughout. Electric field, what is saying is that electric field is along z direction. Let us choose the particular axis. Let this be the origin, and this is along positive z direction. This is positive z direction, and this is negative z direction. The magnitude of electric field is however not constant. That means here electric field is along positive z direction. Magnitude of electric field is not constant, but increases uniformly along positive z direction. Electric field increases uniformly along positive z direction. That means okay, fine. Z direction at the rate of 10 to the power 5 Newton per coulomb per meter. Electric field increases along positive z direction. Okay, so that means here in this particular case, change in the value of electric field per unit distance along z direction, per unit distance along z direction is nothing but 10 to the power 5 Newton per coulomb per meter. Clear? The force experienced by the system having total dipole moment. There is a dipole whose dipole moment is given in the negative z direction. That means here in this particular case, assume that there is a dipole which is present in the negative z direction. Clear? The direction of the dipole is downward. That means here in this particular case, the negative charge will be present over here and positive charge will be present over here. Clear? Then what will the force experienced by the system having total dipole moment in the negative direction? That means how much force will be experienced by this dipole. Clear? So here in this particular case, assume that the dipole length to be how much? This dipole length to be dz. तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम dz एज्यूम करते हैं. Then here in this particular case, assume that electric field at this particular point be E. Electric field at this particular point B, then at this particular point electric field will be E plus DE. Clear? So let me just zoom this particular case. इसको थोड़ा बहुत हम zoom कर लेंगे. Clear? ये सिचुएशन ऐसा है. हाँ, ये वाला केस. तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है,
तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई प्लस डी, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्लियर, डी जेड के बाद इसका वैल्यू डी ई प्लस डी हो गया। क्लियर, और नेक्स्ट डी जेड के बाद डिस्टेंस कितना होगा और डी एड होगा तो ई प्लस टू डी हो जाएगा। क्लियर, यूनिफॉर्मली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस दैट मीन्स change in the value of electric field over a distance of dz, that value is given how much, 10 to the 5. Clear, if that is the case, then what is the force experienced by the dipole? So force experienced by the dipole, so individually how much force will experience by the individual charges. Clear, so force experienced will be force experienced by the negative charge plus force experienced by the positive charge. So force experienced by the negative charge where electric field is E plus D, नेगेटिव चार्ज वहाँ पे फील्ड कितना है, सो माइनस क्यू इंटू ई प्लस डी ई, एंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी क्यू इंटू ई. Clear, so it will be minus q into e minus q into de plus q into e. So this qe got cancelled, so the net force how much we are getting, f net we are getting minus q into de. So right now what we'll do next, will just multiply and divide by dz. So multiplying by dz and divide by dz, so how much will be getting, will be getting minus q into dz whole into de by dz. Clear, so just we have done some arrangement. But what is the minus q into dz? If we look at over here, dipole length is taken as dz, either of the charges are separated by a distance of dipole length, that means the dipole moment over here will be how much, q into dz. Clear, dipole यहाँ पे कितना होगा, q into dz. So finally it will be minus p into de by dz. So just remember there is a formula to find out the net force when electric field is increasing or decreasing uniformly, simply p into dz. So the net force over here, dipole moment, that is given how much, 10 to the power minus 7 coulomb, and d by dz is 10 to the power 5. So it is given minus 10 to the power minus 7 coulomb meter, that is the dipole moment, and d by dz is 10 to the power 5. So it will be minus of 10 to the power minus 2. Clear, this much Newton. Clear, so this much Newton of force will act on the dipole. 10 to the power minus 2 negative, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2 negative 10. So option A will be the correct one. Next, in question number 75, what is saying, it is a connected question. In question number 74, torque experienced by the system is. So torque, we know the formula for torque is tau is equal to p bar cross e bar, that means p e sine theta n cap. So magnitude wise, this value of torque is nothing but p e sine theta. So here in this particular case, theta is the angle between the dipole moment and electric field. So if we just look at the figure over here, the direction of dipole moment is in the negative z direction. Here dipole moment direction negative, and electric field in the positive z direction. That means angle between the given vectors is how much, 180 degree. That means here theta is how much, 180 degree. Clear, if theta is 180 degree over here, that means p e sine 180 degree, but the value of sine 180 degree is how much, 0. So that means the net torque acting on the dipole will be 0. Clear, so option 0 C. Next we'll discuss some MCQ questions from the topic of continuous charge distribution. Clear, as given in the book MTG fingertips. So question number 76, match the following and find the correct option. Linear charge density
surface charge density and volume charge density. So linear charge density is indicated by lambda, surface charge density is indicated by sigma, and volume charge density is indicated by rho. And how do we define this linear charge density? Lambda is nothing but simply dq by dl, or if it is a uniform system, then it will be equal to simply q by l. Clear? That means charge divided by length. So you have to check charge divided by length. So this is q, a के लिए यहाँ पे q होगा. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डी क्यू अपॉन डी एस, सरफेस एरिया डी ए या फिर डी एस से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं. दैट मीन्स यूनिफॉर्म सरफेस के लिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया सिग्मा, दैट इज आर. Yes, and volume charge density nothing but dq upon dv. That means for a uniform system it will be q upon v, total charge upon total volume. That means here c के लिए क्या होगा? p, a with q, aq br cp, aq br cp, aq br cp. Option a is the correct one. Okay, moving to question number 77. A uniformly charged conducting sphere of 4.4 meter diameter. There is a uniformly charged conducting sphere of diameter that is given. Diameter is 4.4. That means radius of the given sphere will be 2.2 meter. Has a surface charge density. This has a surface charge density sigma that is given 60 microcoulomb per meter square. That means 60 into 10 to the power minus 6 coulomb per meter square. Clear? Surface charge density value is given, radius is given, then it is asking what is the charge on the sphere. Clear? So we know that sigma is equal to q by a. A is nothing but surface area of the given sphere. So that means here q equal to sigma into a. Clear? So q equal to sigma into a means 4 pi r square, radius of the given sphere. So here in this particular case the value of q finally that we will get is sigma is 60 into 10 to the power minus 6 into 4 into pi is 3.14 into radius is 2.2. That means its square will be 2.2 into 2.2. Clear? So finally the value that we'll get over here will be if we do some calculations, we'll get, so let it be 60 into 4 into 3, approximately let it be 3. Clear? Approximately let it be 3.14. That means we can write 3.1 into 2.2 into 2.2. That means we know that 22 ka square is 484. That means it will be 4.84 approximately, and it will be into 10 to the power minus 6. So 60 into 40, that will be 240, and 240, so let it be 2 to 2.4 into 10 to the power so it will be 2.4 into 10 to the power 2. Clear? Into 3.1 to 4.84 to 10 to the power minus. So it will be 10 to the power minus 4. Here in this particular case, let 4.84. Let 4.84, that I can take it approximately 5. 4.84 को हम कितना लेंगे? 5. Clear? So this is 0.4 into 5. That means it will be 12 into 3.1. 12 into 3.1 into 10 to the power minus 4. So this value will be
36 36 we'll get 36 point something. Clear? So we'll get how much? 36 point, let it be 1 into 10 to the power minus 4, or it will be 3.6 into 10 to the power minus. Clear? So this will be the charge. 3.6 into 10 to the minus 3.6 or 3.7. Here it is given 7.7.3, 3.7 into 10 to the minus 6, 3.7 into 10 to the power minus 3. So minus 3. So option D will be the correct one. Moving to question number 78, a metallic spherical shell has inner radius R1. Inner radius, this particular value is given R1. ये R1 है, and outer radius that is given R2. Clear? Outer radius is given R1, R2 over here. A charge is placed at the center of the spherical cavity. Charge plus Q as shown in figure. The surface charge density on the inner surface is. Clear? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में स्पेरिकल सेल इज गिवन टू अस. अब मान लो कि एक स्पेरिकल सेल है. हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, and this is the center of the spherical cell, and at the center a positive charge is present over here. Inner and outer radius are given. Okay, so due to the phenomenon of induction, what actually will happen, the inner surface of the sphere, clear, the inner surface, let me just draw it properly. Inner surface of the sphere will acquire equal amount of negative charge. Clear? Here inner surface of the sphere will acquire इक्वल अमाउंट और इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज. मतलब इनर सरफेस में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे डेवलप होगा. तो आउटर सरफेस में कितना चार्ज डेवलप होगा? आउटर सरफेस में प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज. मतलब तो चार्ज आउटर सरफेस में डेवलप होगा वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा उतना ही जितना सेंटर पर प्रेजेंट है. क्लियर? ये इंडक्शन का जो फिनोमिनन है, मतलब उसी फिनोमिनन से ये होता है. क्लियर? अगर ऐसा केस है तो व्हाट इज आस्किंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर स्फीयर. सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर स्फीयर. इनर स्फीयर में चार्ज प्रेजेंट है माइनस क्यू. तो एंड इनर स्फीयर का जो स्पेरिकल सेल का जो रेडियस है लेट इट बी R1, ये R1 हुआ. तो सिग्मा कितना होगा इनर स्फीयर का? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया. तो चार्ज इज माइनस क्यू divided by area is 4 pi r1 square. So sigma surface area कितना होगा? माइनस क्यू अपन 4 pi r1 square. माइनस क्यू अपन 4 pi r1 square. So option B will be the correct one. Okay, connected question 79. In question number 78, the surface charge density on the outer sphere is. Outer sphere में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा? सो लेट मी जस्ट take the photo of this figure. So here in this particular case, surface charge density on the outer sphere, we know that the charge which is present on the outer surface, clear, that will be how much? Plus q. And area, or you can say radius of the outer surface is R2. Then surface charge density will be sigma equal to, or sigma 2 is equal to q upon area. So charge is plus q divided by area is 4 pi r2 square. तो सिग्मा 2 का वैल्यू कितना होगा? सरफेस डेंसिटी ऑफ द आउटर सरफेस विल बी q upon 4 pi r2 square. Q upon 4 pi r2 square. Option B, this q upon 4 pi r2 square. Q upon 4 pi r2 square. Q upon 4 pi r2 square. 79. Both have shown. Actually in book this particular value is 2. This particular value is given 2q upon 4 pi r2 square. So option B will be the correct one. Clear? Rest others will be wrong.
Okay, so here in the last question of this particular lecture, question number 80, a positive charge q is uniformly distributed along the circular ring of radius r. जैसे फिगर में शो किया गया है वैसा ही है केस, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. A small test charge q is placed at the center of the ring as shown in figure, जैसा शो किया गया है. Then in this particular case, if which one will be correct? If q is greater than 0, if q is positive and is displaced away from the center in the plane of the ring. Plane of the ring is this the plane within the circumference of the ring here, not perpendicular to the plane. Clear? The charge will be displaced along the plane of the ring. That means we can displace the charge either towards right or towards left, or we can displace it upward or downward, not inward or outward. Clear? इनवर्ड को, इनसाइड को हम क्रॉस से इंडिकेट करते हैं और आउटवर्ड या फिर आउटसाइड को हम डॉट से इंडिकेट करते हैं. क्लियर? सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस पहला जो ऑप्शन यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज हम इसको कंसीडर करेंगे जो कि सेंटर पे है और उसको हम राइट साइड की तरफ अगर हम डिस्प्लेस करेंगे. क्लियर? सो लेट मी ड्रॉ द फिगर वंस अगेन वेरी क्लियरली. वी हैव टेकन ओवर हियर वन spherical cell or a conducting sphere here, not conducting sphere, it is a circular ring of radius r. This is a circular ring whose radius is given to us. This is the center, and at the center a charge is present over there. That charge it be q. Clear? It can, that charge can be positive or negative. Clear? And over here positive charges are uniformly distributed. कुछ पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे प्लस क्यू पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. क्लियर? ओके, राइट नाउ हियर इन दिस प्लेन ऑफ द रिंग. अब मान लो कि ये जो रिंग है ये अभी हमारे नोटबुक के ऊपर ही प्रेजेंट है. तो रिंग का जो प्लेन है, मतलब जिस प्लेन के ऊपर वो बैठा है या फिर जो दैट प्लेन अलोंग व्हिच इट्स रेडियस विल बी प्रेजेंट और डायमीटर विल बी प्रेजेंट. रेडियस या फिर डायमीटर मतलब जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है वही हमारा रिंग का प्लेन होता है. क्लियर? सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज सेइंग, अगर हम इस चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे आइदर राइट और लेफ्ट और अप और डाउन, तो इसमें हम कौन सा लेंगे? हम डिस्प्लेस करें मतलब विल डिस्प्लेस द चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स राइट. क्लियर? देन व्हाट विल हैपन? तो इसको अगर हम डिस्प्लेस यहाँ पे करेंगे तो मान लो कि मैं ये जो पूरा का पूरा रिंग है इसको लेट मी डिवाइड दैट रिंग इनटू 2 पार्ट्स. इसको 2 पार्ट्स से हम इसको डिवाइड कर दें. Let us divide that ring into 2 parts. अच्छा, जब हम इस चार्ज को रिंग के राइट साइड की तरफ हम डिस्प्लेस करें, मान लो कि यहाँ पे ये चार्ज प्रेजेंट हो गया है, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस जो कि रिंग का राइट साइड में प्रेजेंट है, हाफ ऑफ द रिंग, मतलब जो राइट साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है विद इन द हाफ ऑफ द रिंग, द फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू दिस हाफ पोर्शन ऑफ द रिंग which are present at the right side will be much more larger as compared to the force of repulsion due to the left portion of the ring. Clear? भले ही राइट पोर्शन में जितना चार्जेस प्रेजेंट है मैग्नीट्यूड वाइज, लेफ्ट पोर्शन में उतना ही चार्जेस प्रेजेंट है, बट जब हम इस रिंग को कुछ dx डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट, तो इसके ऊपर इस वाले पोजीशन पे राइट साइड में जितना भी चार्जेस होंगे उनके वजह से जो फोर्स होगा वो लेफ्ट वाले के पोर्शन में जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनसे ज़्यादा होगा. क्लियर? दैट मीन्स हियर रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू द राइट पोर्शन ऑफ द रिंग विल बी मच लार्जर, एंड ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, उसके वजह से क्या होगा, ये जो चार्ज अभी यहाँ तक डिस्प्लेस किया गया था उसको अगर हम फ्री कर देंगे देन इट विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर. ये सेंटर की तरफ यहाँ पे मूव करेगा. तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया, दैट मीन डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग, दैट मीन इट विल पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर, दैट मीन दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, इफ q is negative, charge is less than 0 and is displaced away from the center in the plane of the ring. Clear? It will never return to the center. Okay,
सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इट इज सेइंग इज दैट अगर ये जो चार्ज है इसको अगर हम नेगेटिव लेंगे यहाँ पे और उसको हम क्या करेंगे, वही डी एक्स अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कर रहे हैं राइट साइड की तरफ, तो ये क्या होगा, दैट विल नेवर रिटर्न टू द सेंटर ऑफ द रिंग। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो राइट लेफ्ट अप डाउन इतना ही हो सकता है, नॉट अपवर्ड और डाउनवर्ड। क्लियर, ऊपर या फिर नीचे जो है मतलब आउटवर्ड और इनवर्ड। क्लियर, यहाँ पे आउटवर्ड या फिर इनवर्ड की तरफ यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट करने के लिए नहीं बोला गया, तो उस केस में ये नेगेटिव चार्ज कभी भी सेंटर की तरफ रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर, ऑब्वियसली इन दैट पर्टिकुलर केस ये वाला केस में क्या होगा, जब इस नेगेटिव चार्ज को हम राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, जब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज होगा तो जो जो रिंग है, रिंग का जो राइट हाफ, क्लियर, आधा हाफ पोर्शन जो रिंग राइट साइड में प्रेजेंट है उसमें जो चार्जेस हैं उनके वजह से जो एट्रैक्टिव फोर्स और जो एट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन जो रिंग है यहाँ पे जो चार्जेस प्रेजेंट है उनके वजह से जो एट्रैक्टिव फोर्स, इन दोनों में डिफरेंस आएगा। क्लियर, दैट विल नॉट बी सेम। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है तो राइट पोर्शन एंड लेफ्ट पोर्शन के बीच वजह से जो एट्रैक्टिव फोर्स दोनों सेम होगा एंड दैट विल कैंसिल आउट, मतलब नेट फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज एट द सेंटर विल बी जीरो। बट जब हम इसको राइट साइड की तरफ हम यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उस वाले केस में क्या हो रहा है, the force that will arise due to the right half portion of the ring where the positive charges will be present, that force will dominate. Clear, and that force will be larger. Clear, और उसके वजह से क्या होगा, that negative charge will continue to move towards the circumference of the ring, towards the right circumference of the ring. Similarly अगर हम इस नेगेटिव चार्ज को अगर अपवर्ड थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे देन इट विल कंटिन्यू टू मूव टूवर्ड्स अप। क्लियर, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। सिमिलरली अगर हम इस नेगेटिव चार्ज को अगर हम डाउनवर्ड मूव करेंगे, थोड़ा सा भी डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली सर्कमफेरेंस की तरफ चलेगा। क्लियर, तो ऐसा ही केस होगा। बट अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को अगर थोड़ा सा ऊपर हम डिस्प्लेस करेंगे तो ये सेंटर की तरफ आएगा, या फिर थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस करेंगे तो भी सेंटर की तरफ आएगा, थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो भी सेंटर की तरफ फिर से चला आएगा। तो ऐसा ही वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज कम टुवर्ड्स द सेंटर। So option B here it is saying that it will never return to the center, it will continue move till hit the ring. So finally it will hit the ring. Okay, obviously it will hit the ring, so option B will be the correct. Next, if charge is negative it will perform SHM. चार्ज अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या होगा, ये SHM परफॉर्म करेगा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट along the एक्सिस। सो एक्सिस ऑफ द रिंग, यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में एज्यूम कर लो कि ये एक रिंग है और इसका यहाँ पे ये सेंटर पर हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखेंगे। क्लियर, और इसको हम क्या कर रहे हैं, विल डिस्प्लेस इट अलोंग द एक्सिस। व्हिच वन ऑफ द एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, मतलब अंदर की तरफ जाने वाला या फिर बाहर की तरफ आने वाला लाइन जो होगा दैट विल बी द एक्सिस ऑफ द रिंग। क्लियर, तो सो फाइनली हियर इन दिस पर्टिकुलर केस अगर ये चार्ज को हम अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ यहाँ पे डिस्प्लेस करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा। क्लियर, तो इसका अगर मैं साइड व्यू यहाँ पे थोड़ा बहुत हम, ये टॉप व्यू है, अगर हम साइड व्यू से देखेंगे, साइड व्यू से ये रिंग कैसे दिखाई देगा, दिस रिंग विल लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ दिखाई देगा, जस्ट उसका डायमीटर जितना है उतना ही पोर्शन हमें दिखाई देगा। एंड यहाँ पे ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, मान लो कि ये सेंटर है, सेंटर से हम यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज को हम लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पे डिस्प्लेस करेंगे। क्लियर, तो ये जो रिंग पर जितना भी चार्जेस यहाँ पे, इसको थोड़ा बहुत तो 3D में अगर हम समझेंगे तो मान लो कि ये रिंग कुछ assume that this ring is something like this. ये रिंग का प्लेन, यहाँ पे प्लेन को थोड़ा बहुत शो करेंगे, दिस इज द प्लेन ऑफ द रिंग एंड एट द सेंटर, ये सेंटर पर, ये सेंटर लोकेशन है एंड व्हाट विल डू, विल डिस्प्लेस द चार्ज लिटिल बिट अपवर्ड। क्लियर, इसको थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको हम थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करें
और इस वाले पर्टिकुलर केस में क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द गिवन रिंग। क्लियर? तो व्हाट विल हैपन, जब ये चार्ज नेगेटिव चार्ज मान लो कि यहाँ पे होगा, हियर द नेगेटिव चार्ज विल बी देयर, सो दैट नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय ऑल द पॉजिटिव चार्जेस। जितना भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, दे विल अट्रैक्ट दिस नेगेटिव चार्ज। क्लियर? they will attract this negative charge. Clear? And finally, due to resultant force, the resultant force will be directed in the downward direction. Resultant force on the negative charge will be directed in the downward direction. Clear? अच्छा, तो जब इस वाले पोर्शन में ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, सेंटर की तरफ आएगा। क्लियर? और अगर फोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये सेंटर में ना रुक के ये ओवरशूट कर जाएगा, मतलब ये क्या होगा फाइनली, दैट विल कम हियर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। तो जब नेगेटिव चार्ज इस वाले पोजीशन पे आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो वही जो पॉजिटिव चार्जेस रिंग पे प्रेजेंट होंगे, उनके वजह से क्या होगा, उनके वजह से जो फोर्स होगा, दैट फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। क्लियर? सो दैट मीन्स व्हाट, हियर दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल डू व्हाट, SHM। ये क्या होगा, ये जो मेन पोजीशन है या फिर जो एक्सिस, रिंग का जो एक्सिस है, एक्सिस कौन सा पोर्शन है, ये हमारा एक्सिस होगा। दिस विल बी द एक्सिस ऑफ द रिंग, ये जो कि सेंटर से क्रॉस करना चाहिए, दैट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द दैट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। क्लियर? दिस विल बी, let me draw the axis of the ring. So here this is the axis of the ring. Clear? This is the axis of ring. So finally what the charge particle will do, negative charge particle, it will do SHM about the axis of the ring. Clear? So here option C, what is saying, it will perform SHM for small displacement along the axis. So displacement, yes, displacement should be small. That means all the three options are correct. That means so what will the correct option over here, option D will be the correct one. All the above are correct.